ठीक है बेटा। रेडिश से क्या हो जाएगा, रेडिश पर्पल से वॉयलेट कलर, और खुद का क्या होता है इसका कलर, जैसे ब्लू भी होता है और रेड कलर का भी होता है बेटा, ये दोनों ही फ्लावर्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। जेरेनियम की बात करते हैं। जेरेनियम का खुद का कलर रेड होता है, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज रेड, और बेसिक मीडियम में ब्लू। तो ये सारे हैं हमारे। तो नेक्स्ट टाइप में अगला सेवंथ हमारे पास है फिनोक्सिलीन। फिनोक्सिलीन ये होता है सिंथेटिक। कैसे होता है, सिंथेटिक, खुद का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, एसिडिक मीडियम में कलरलेस, और बेसिक मीडियम में जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक। तो ये खुद कैसे हो जाता है, इसके बाद बेसिक मीडियम में आकर पिंक हो जाता है, इस तरीके से कलर चेंज कर लेता है। एट मिथाइल ऑरेंज, बेटा ऑरेंज कलर होता है खुद का। कैसा होता है, ऑरेंज, एसिडिक मीडियम में रेड, एंड बेसिक मीडियम में येलो। मिथाइल रेड, सिंथेटिक येलो इन एसिडिक मीडियम, येलो इन एसिडिक मीडियम, violet in basic medium, and red in neutral medium. Board is visible to all, beta. These are some indicators which are natural and synthetic. That means man-made indicators. Now I am dealing with some other which is known as olfactory indicators. Okay, beta. Next is 10th is onion, which is an olfactory indicator. What do you mean by olfactory indicator? The indicator which changes their smell when taken into the acidic or basic medium. Onion is olfactory. It has specific smell. It has specific smell, which is its smell is original smell. Violet, sorry, in basic medium, no smell, no to that component. I am rubbing the above two
Above two indicators. Next indicator is vanilla extract. All of you know about the vanilla extract. You eat vanilla ice cream. That extract also used as indicators. Vanilla extract is olfactory indicator, specific smell in acidic medium, no smell in basic medium. Next, clove oil. लौंग का तेल होता है क्लॉव, क्लॉव होता है लौंग का तेल, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ओके बेटा, these are all indicators. Write down in your notebook. Hurry up. Any doubts बेटा? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है साइक्लोन की वजह से। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? नोट डाउन बेटा। हो गया। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टाइम लिखा बेटा, राइट डाउन इन नोटबुक। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। It is the mixture of various indicators. It is the mixture of various indicators. Full stop. It is indicator. It is more. It is more sensitive indicator as, एक मिनट बेटा इसको लिखवा देता हूँ, as it can give different colors in different mediums. It is the mixture of various indicators. It is the mixture of various indicators. It is more sensitive indicator. It is more sensitive indicator as it gives different colors in different mediums. Next line लिखा, it is helpful. It is helpful to estimate, estimate, estimate the pH of, estimate, estimate, estimate the pH of same acid, the pH of the same acid
in different concentrations of the same acid in different concentrations. Therefore, this indicator is also called, therefore, this indicator is also called pH indicator. pH, जिस तरीके से लिखो बेटा, pH. Therefore this indicator is also called, therefore this indicator is also called P. Okay beta, next topic is classification of acids. Classification of acids. Classification of acids. The acids can be divided into, sorry, the acids can be divided into various categories on the following basis. The acids can be divided into various categories on the following basis. First is ability, availability of hydrogen ions, bracket में strength. On the basis of, second type is on the basis of origin. That means source from which they are obtained. Third, amount of acid that is present, how much quantity is present in an acid, that is known as concentration. The specific term is concentration for that. Next is molecular composition. Fourth one is molecular composition. Fifth, number of protons. Number of protons. This is known as basicity of an acid. Basicity. Okay, beta. The 5 bases on which the acids are characterized. Okay, beta. One by one हम इनको study करेंगे. We have study one by one. Then start with the first. That is strength. It means the number of hydrogen ions present in acid gives the strength of the acid. जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, स्ट्रेंथ होगी. अब बात आती है कि हाइड्रोजन आयंस बनते कब हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन आयंस कब बनेंगे, जब बेटा वो एक्वस मीडियम में होंगे. कहाँ होंगे, तो इट इज ऑफ 2 टाइप. मैं अब आपके लिए इसमें लिख रहा हूँ बेटा. फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस में
इसमें it is of two types. First is strong acid. Strong acid. Those acids which are those acids which are completely ionized in an aqueous medium, in an aqueous medium, and give large number of hydrogen ions. There is one word which is also ionized. Ionized means to break down. हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए. बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है मेरे यहाँ पर. Sorry for regression, beta, but those acids which are completely ionized means ionized word का example. HNO3, acid, hydrobromic acid, hydroiodic, HI, phosphoric acid, SCPO4, phosphorus acid, these are all strong acids. These are all examples of strong acids. One more example, this is a perchloric acid, beta. This is also important, perchloric acid. HClO4, perchloric acid. In these all acids, they totally break down. If HCl is taken in aqueous state, that is in aqueous medium, it will dissociate into H positive and Cl negative ion. This H positive ion
when react with an ion which is known as, this is SCO positive. This ion is known as hydronium ion. That means larger the formation of hydronium ion in water, higher the position number of hydronium ion, larger the value of formation of hydronium ion, more is the acid, strong will be the acid. जितने ज्यादा वो वाटर में क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा, उतने ही ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड. इट्स क्लियर बेटा, इट्स क्लियर और नॉट? बेटा आई हैव, इसमें से एक को मिटा लेना, गलती से यहाँ लिख दिया, फॉस्फोरिक नहीं थी वो, फॉस्फोरस एसिड को यहाँ से हटा लेना, ये वीक एसिड है बेटा. ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, ओके, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड. उसको हटा लेना बेटा. ठीक है, rub it from the phosphoric acid. Now next type is weak acid. Only 2 or 3 minutes I need to beta yours. Weak acids, those acids which are partially ionized, means there is formation of ions but in little quantity. But strong acids are those they are completely ionized, they break into ions. Examples are carbonic acid, carbonic acid, acetic acid, phosphoric acid, butyric acid, C3H7COOH, lactic acid, CH3COOH, okay beta, these are the examples of weak acid. In these acids the formation is like that. I am telling that about when the acetic acid, which is weak acid, react with water, that means we make aqueous solution, then the formation of ions is like that, like CH3CO negative plus H3O positive, which means there are the ions are formed partially. These acids, both the ionized and unionized acid molecules are present. मतलब क्या हुआ कि जो टूट गया है वो भी प्रेजेंट है और जो नहीं टूटा है वो एसिड यानी दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. मींस इस यहाँ पर आपसे इसकी मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे बेटा, यानी पहले वाली एसिड के भी, और जब ये आयन एसिड कहा जाता है इन्हें. ओके बेटा, राइट डाउन कर लो बेटा. हाँ बेटा, हो गया, राइट डाउन हो गया बेटा. ओके बेटा, थैंक यू बेटा.